ठीक है विशाल सर, over to you I guess. अच्छा, any questions from the previous session दोस्तों? Friday को we covered requirements. Any questions from that? Just wanted to ask, I hope the journal requirement format whichever we get would not be that like which you gave us for this assignment. नहीं, that is just for an assignment purpose. There are two ways through which I can answer your question. First is, Param, you may probably not even receive a requirement document in your career, because you may not even get this chance to work on these waterfall V models. So you would probably not even seeing any of those 250 300 pages document ever in your career. Secondly, in case if you get that chance, 1% 2% chances jahan hai, uske andar when you get that detailed document, it would be a very detailed document, section wise listing hoti hai features ki. It would be a very detailed document, not any close to what we gave for assignment. This was just for our practice purpose that we created. On that note, Vishal sir, do you have any requirement document with you from those ancient times that we can show our team? ढूंढना पड़ेगा यार, कोई ना कोई मिल जाएगा for sure. ठीक है, let me take a note यार परम यहाँ पे ना, एक बार अगर मिलता है ना तो we can share that with you, with everybody here. एक बार आप लोगों को go through करवा देते हैं, but then it would be a detailed document with each section. जैसे अपन डिस्कस कर रहे थे पहले, that section 1.1 would be for login page, 1.1.1 would be for username. In that username field there would be multiple bulleted items telling ki what are the things, what are the characters which are valid, what are the things that are not valid. Vishal said we are not, are we going to not cover that actor wala document आज? वो use cases में करेंगे ना हम today. हाँ, so you will get a feel of it Param today ना. Yeah, see, ultimately these use cases, specifications, all these are requirements, but requirements basically that comes from client are not detailed, right? When the requirements are broke down into the detailed implementable form, then they are either called use cases. Okay, so requirement document is also used to write test cases, and use case document is also used to write test cases. Okay. Because ultimately the purpose of all these documents is to get an understanding of an application from technological perspective, technical perspective, and from business perspective. So when you read a requirement document, it is not thorough, and you get a sense that okay, what are the basically business workflows. But use cases are then a detailed document where requirement, so as a name says, अच्छा ना हम use case में discuss करते हैं, leave it. Yeah. So okay, any questions from the previous? It's done. Today's session, use cases. So I would like to say that probably you will never get to see a use case document in your life. Okay, because use cases used to come earlier when there used to be a detailed documentation hoti thi projects mein, right? Now in agile, use cases have been replaced by user stories, and in this session only we will be covering what are the user stories. So you will be able to differentiate clearly between the use case and the user stories. Okay. And I will let you know that why use cases have been replaced by the user stories. So we'll talk about use cases today. So, but your question must be, I mean, you must ask this question that if we are not ever going to see this document, why are we having this in our session? Why are we having this session for a use cases, right? वो इसलिए है कि you may come across, since you are in this industry, so you need to understand the terminology,
let's say in a meeting, in a discussion, if somebody is referring to use case, then you should be able to understand what that person is talking about. You should be able to visualize, अच्छा use case ये होता है. Visualize somewhere in your head. ठीक है. So, and if somebody is saying that, okay, business cases, right? Negative scenarios, positive scenarios, workflows, then you should be able to relate. You should be able to understand those terminologies that are there in the use cases, right? So, and another reason is you may come across a project where probably, I mean, the project was built somewhere in 90s, right? And now that project is being migrated. Okay. And you are being a tester, you are given उस time के उस project के use cases to understand the project, or to write the test cases, or to convert those use cases into the user stories. कुछ भी काम मिल सकता है. आप में से कल को कुछ लोग स्क्रम मास्टर बन जाएंगे. You never know. ठीक है. People start their career as an ethical hacker and they end up being a trainer. ठीक है. So you never know. You are going to start as a software tester और कल को आप स्क्रम मास्टर बन जाओगे. कोई बोलेगा नहीं नहीं, I want to be a product owner. So that will happen definitely. ठीक है. So when you are a scrum master, when you are a product owner, you may get a product that is being migrated, right? And you are the owner, so you will be referring the use cases, the documentation of that project to convert those use cases into user stories. Because now you will be following the agile methodology to migrate. So that's another reason, right? And then we will cover what is use case, reviewing of use cases, pretty much similar to what we do in the requirements, components of use cases, objectives, and then user story, which is very interesting thing. क्योंकि वो आपने day in and day out when you will be doing. Difference between user story and use case, and then a workshop. All right. UML, Unified Modeling Language. And now question comes, why I'm teaching this? Kyunki in use cases, so basically as the name suggests, use cases. एक तो test cases होता है, एक use cases होता है. So use cases is the cases how a user is going to use the application. There could be multiple ways that a user can use an application, and all those use cases, all those ways in which a user is going to use the applications are documented in use cases. Okay. And based on that document, we create test cases. The use cases are used to create test cases. Note it down. Now, why UML? Because in use cases, sometimes to illustrate the workflows mean how application is interacting with its different components. We use a graphical representation. And for doing that graphical representation, we use Unified Modeling Language. You must have learned about ER diagram, entity relationship diagram. Here you get to know how the workflow is happening. There is a starting point, then there is a decision box, and decision box may yes, no, and then the rectangular boxes again, right? So wo ER diagram was the entity relationship diagram. How similar to that in use cases, we use UML, Unified Modeling Language, which is a graphical representation on how a system is interacting with its component. उस system में क्या-क्या चीजें होते हैं, we will discuss it in the next slide. Now the use case. No. Okay. Thank you. Okay. So in use case, what exactly use case is? Sequence of actions performed by a system. System. Now we all clear. कल पिछली क्लास में किसी ने पूछा था system क्या है? System is application को हम system भी बोलते हैं, ठीक है?
प्रोडक्ट भी बोलते हैं, you can call it anything, सिस्टम, प्रोडक्ट, एप्लीकेशन, राइट। सिस्टम इसलिए बोलते हैं कि आपको यार हमने सिस्टम टेस्टिंग पढ़ा था। So system testing is what? When the all components of an application are integrated together, we test the application's end-to-end workflows as a system. Okay, that's why it is called system. Product, obviously, you know, product is the outcome of a project is a product or a service. तो वो सर्विस भी हो सकती है, एक प्रोडक्ट भी हो सकता है, एंड देन एप्लीकेशन तो आपको पता ही है एप्लीकेशन। So sequence of actions performed by a system. What a system does? ये करता है, if we talk about Gmail as a system, what does Gmail do? Gmail can send an email, Gmail can receive an email, you can there are a lot many features. You can do a mail merge, you can do a search, you can make an attachment. All these features are there. All these are basically the actions that are performed by that system. All these are the functionalities of the system. So it is comprehensive description of a task or a series of tasks that users will accomplish using the software and includes the responses to the software to the user. So it is a description of task or the series of tasks, steps that a user will accomplish using the software and include the response of the system, software to the user actions. So आपको यहाँ पे in use cases you get to know, you perform some action and what will be the response of an application from your action, right? So when I'll give you an example of a use case, this will get more clear. Okay, role of QA. What is the role of QA in use cases? First of all, we review the use cases. अच्छा, review के use cases create कौन करता है? Again, business analyst, right? And what we do, we review the use cases. We document any query that we come across in the review comment form, the similar form that we have shared with you for the requirement review. Then we will repeat this process until the use case document is baseline. When use case document is baselined, what we do? We start writing SBTs. SBTs is what? Test cases. SBT is scenario based test cases. तो यहाँ पे एक डिफरेंस मैं आपको बताना चाहूंगा बिटवीन स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट एंड द यूज केस डॉक्यूमेंट, क्योंकि सो फार व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम द यूज केस डेफिनेशन कि क्या होता है, आपको क्या समझ में आया? It's basically it captures the user scenarios, how user is going to use the application. ठीक है कि जैसे if you remember, I gave you an example other day of an ATM. Okay, so ATM में क्या है? User can withdraw the money. Okay, that's a one case. Another case is that's a positive scenario. User performs every action fine, swipe the card, enter the right PIN and right amount. But another scenario is another use case for the same functionality is user first swipe the card, checks the balance, and then goes into withdraw money mode. Okay. So these are the basic flows, alternative flows, and then the exception flows. तीन तरह के flows capture करते हैं ना use case document. Okay. So these flows are basically what? Scenarios. How users are going to use applications. In a use case document, you will not get a specification which is PIN should be only 4 characters and that correct all those characters should be numeric numbers only. ये जो है, या फिर if I talk about a login screen, okay, so password should be 8 characters long. It should have at least one capital,
character. It should have at least one numeric character. It should have at least one special character. ये क्या है? These all are the specifications. You will not find these specification in a use case document. ठीक है? So अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ. These are basically requirement of that particular field. So आपको याद है हम पूछते थे बिजनेस रिक्वायरमेंट और प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट. ठीक है? सो बिजनेस रिक्वायरमेंट ये हो सकती है कि इट्स अ फाइनेंशियल एप्लीकेशन. Password must be very, very strong. Yeah, there should be ways that user, there should be ways to protect the password of a user. ये एक रिक्वायरमेंट है हमारे पास, बिजनेस रिक्वायरमेंट. हमें समझ में आ गई. ठीक है? बट जब हम इस बिजनेस को प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे कि every 3 months we will prompt the user to reset the password. बैंक applications में होता है ना ऐसा. And that will be a hard prompt. It's not that you can bypass it. Okay, remind me later and बाद में कर दिया. आपको जब आता है नोटिफिकेशन कि आपका पासवर्ड एक्सपायर हो गया या 3 months are over, you have to renew it. So जब आपकी स्पेसिफिकेशंस होंगी फॉर टू इम्प्लीमेंट दैट बिजनेस रिक्वायरमेंट की पासवर्ड जो है शुड बी क्रिटिकल, इज क्रिटिकल, एंड वी नीड टू फाइंड वेज, वी नीड टू इम्प्लीमेंट इट इन सच दैट कि पासवर्ड जो है वो सेफ रहे. तो वन वे इज वी आर फोर्सिंग यूजर टू चेंज पासवर्ड एवरी 3 months, और वो प्रोडक्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना हम. प्रोडक्ट एप्लीकेशन इज फोर्सिंग यूजर कि तुझे लॉग इन नहीं करने देंगे हम. ठीक है? So business requirement is now translated into product requirement. ठीक है? उस दिन क्वेश्चन पूछा था ना किसी ने. ठीक है? तो यहाँ पे ये डिफरेंस है प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट और बिजनेस रिक्वायरमेंट में. देन और उसके बाद फिर आपका आता है स्पेसिफिकेशंस. स्पेसिफिकेशंस आर स्पेसिफिकली फॉर अ फील्ड. ठीक है? कि हाँ इसका स्पेसिफिकेशन क्या है. देन कम्स यूज केसेस. use cases में we will not talk about specification, but use cases में we talk about business requirements. क्योंकि the end user who is coming to application, use the application, वो किसी purpose से आ रहा है उस application पे. If I'm going to Gmail, I'm opening an account with Gmail, तो मुझे पता है कि मैंने Gmail से मेल्स करनी है, मेल रिसीव करनी है, मेल सेंड करनी. दैट्स माय पर्पस. तो जब उस पर्पस को जब मीट करने आ रहा है कोई, तो उसके यूज केसेस जो हैं वी कैप्चर देम इन द फॉर्म ऑफ यूज केस इन यूज केस डॉक्यूमेंट. तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, अंडरस्टैंड, बट दो चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको अब तक. डिफरेंस बिटवीन बिजनेस रिक्वायरमेंट एंड प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट, देन स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट. ठीक है? एंड देन यूज केसेस. यूज केसेस इसलिए होते हैं, सी ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स आर रेफर्ड बाय यूजर्स टू राइट द टेस्ट केसेस. अब फ्रॉम स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट व्हाट वी राइट? वी राइट द RBTs, requirement based test cases. Okay. And the requirement based test cases is, what is the product requirement? Minimum 8 character का पासवर्ड होना चाहिए. So what test case will you write? Validation वाला. Try to enter a password with 9 characters. 9 से तो चल जाता है, minimum 8 होना चाहिए. 7 it should not accept. So you are writing requirement based test cases. Now another form of test cases is scenario based test cases. ठीक है? And the scenario based test cases is कि बंदा ATM में पैसा निकलवाने आया, उसने कार्ड स्वाइप किया, लेकिन कार्ड स्वाइप करने के बाद उसका फोन आ गया और वो फोन सुनने लग गया. इट वाज अर्जेंट, बच्चे के स्कूल से था मे बी. ठीक है? इट वाज अर्जेंट एंड उसने फोन करना शुरू कर दिया. और फोन करने के बाद जब वो उसका फोन खत्म हुआ, इन द मीन टाइम उसका सेशन टाइम आउट हो गया एंड ही हैड टू स्वाइप द कार्ड अगेन. सो ये क्या है? दिस इज यू विल नॉट फाइंड this case anywhere in the specification document, anywhere in the requirement document,
but you will find this, not this specific case, but this workflow in the use case document, from where you can think of all these scenarios. What if user comes, swipe the card, phone आ जाता है, it's a, आप phone नहीं बोलोगे, आप बोलोगे, but after swiping the card, user could not enter the pin for next 2 minutes या 1 minute, जो भी टाइम है, उस केस में क्या होना चाहिए? एंड दिस में हैपन, कई तरह के यूजर्स आते हैं इस पे. तो what we do, we write scenario based test cases from which document? User case document. Use case document. All right, clear? Any questions so far? Okay. Requirement and use cases, we already discussed about it. So requirement document defines the business needs. Okay, I illustrated it with an example for a project, whereas use case is typically a specific statement implied or derived from the requirement. Business requirement है कि जैसे आपको मैंने पासवर्ड वाला एग्जांपल दिया कि पासवर्ड सिक्योरिटी बिजनेस रिक्वायरमेंट है फॉर अ फाइनेंशियल एप्लीकेशन, बैंकिंग एप्लीकेशन, उसको प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है. और प्रोडक्ट के बाद फिर जब आपने उसको इंप्लीमेंट कर दिया कि यू आर गोइंग टू इंप्लीमेंट इट द वे दैट एवरी 3 months वी विल बी गिविंग अ हार्ड स्टॉप टू अ यूजर दैट ही कैन नॉट मूव अहेड विदाउट चेंजिंग द लॉगिन पासवर्ड एंड ट्रांजैक्शन पासवर्ड. ठीक है, अब उसमें व्हेन वी पुट सिनेरियोज इनटू इट, ठीक है, अब उसमें सिनेरियो ये हो सकता है यूजर इज लेजी. ठीक है, अब उसके पास पासवर्ड चेंज करने का प्रॉम्प्ट आया, उसने कैंसिल कर दिया, तो यार मुझे लॉगिन नहीं करना, छोड़, मेरे पास इंपॉर्टेंट काम ही नहीं है. दूसरी बार आया, तीसरी बार आया, कितने अटेम्प्ट हम अलाउ करेंगे यूजर को? सिनेरियो ये भी हो सकता है कि यूजर इज अपडेटिंग अ लॉगिन पासवर्ड बट नॉट ट्रांजैक्शन पासवर्ड. ठीक है, अच्छा, एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि दोनों की वैलिडिटी जो है ऑफ वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शन पासवर्ड एंड लॉगिन पासवर्ड इज 3 months. बट ये भी हो सकता है कि यूजर ने अपना लॉगिन पासवर्ड जनरेट कर लिया हो ऑन अ गिवन डेट, लेट्स से ऑन 26th September, और ट्रांजैक्शन पासवर्ड उसने तब नहीं किया हो और उसके 5 दिन बाद किया हो या 10 days लेटर किया हो. तो उस प्रॉम्प्ट को हाउ डू यू वांट टू कीप इट फ्लेक्सिबल कि ठीक है लॉगिन वाला चेंज कर ले, ट्रांजैक्शन वाला रहने दे. ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे सिनेरियोज हैं जो हो सकते हैं, एंड वी गेट टू नो कि इन सब सिनेरियोज के बारे में फ्रॉम यूज केस डॉक्यूमेंट. आपको ये सब सिनेरियो जो मैं बता रहा हूँ ना, यू विल नॉट फाइंड दीज सिनेरियोज इन अ यूज केस डॉक्यूमेंट. यूज केस डॉक्यूमेंट में आपको 3 तरह के यूज केसेस मिलेंगे एक ही एप्लीकेशन को करने के, बट we'll discuss more about it कि कैसे करना. Okay, actor and use cases. So this is just an example of a unified modeling language. ठीक है, so in unified modeling language or in the use case, you will find 2 things: actor, ठीक है, and a goal and a response. And who is actor? Actor is someone who initiates or triggers a workflow or a user scenario. जैसे आप जाते हो एटीएम पे, तो अगली बार मैं एग्जांपल चेंज कर लूंगा यार. तो एटीएम में जाते हो, व्हेन यू स्वाइप द कार्ड, ठीक है, तो व्हाट डू? यू आर एन एक्टर हु स्टार्ट्स अ वर्कफ्लो. ठीक है, व्हेन यू क्लिक ऑन अ सेंड कंपोज ईमेल बटन, यू आर एक्टिंग लाइक अ एक्टर, आप एक वर्कफ्लो स्टार्ट कर रहे हो. ठीक है, देन तो इफ यू लुक एट दिस एग्जांपल कि
यहाँ पे फ्रेड स्मिथ इज एन ऑर्डर एंट्री क्लर्क. So Fred Smith क्या करता है? When he enters an order in the system, right? He triggers, he starts a workflow. Okay. Then Mr. Southerby is a CEO. तो फ्रेड स्मिथ को सीईओ को पूरी रिपोर्ट देनी पड़ती है और उसको बिल शो वीकली बिलिंग भी दिखानी पड़ती है. ठीक है. सो मिस्टर सौदरबाई जो है, मिस्टर सौदरबाई इज अनदर एक्टर. So anyone who starts a workflow or triggers a workflow and somebody who uses the application or is used by the application is called an actor. ठीक है. तो जो मैंने एग्जांपल दिए इनमें human people who are starting a workflow are basically the actors. But कई बार क्या होता है कि एक एप्लीकेशन, एक पेरिफेरल डिवाइस is also an actor for a system. For example, एक printer is also an actor, क्योंकि printer को command जो जाती है, that command goes from a computer system. Okay, and then printer prints out a print. So all these are actors. So on a nutshell, actor is somebody who starts or triggers the workflow, or right, a person, a system, or some external entity. देखो यहाँ पे external entity जो है ना, it's a printer. ठीक है. और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं. आप शॉपिंग करने जाते हो मॉल में. ठीक है. सो आपका वो जो स्कैनर, जो गन होती है, ठीक है. So that scanner is basically actor. The moment it scans a code, the workflow of a billing process starts. Okay, so that's why they call a person, a system, or some external entity linked to one or more system use के कारण. अच्छा, अब मैं बताता हूँ. मैंने आपको पर्सन बता दिया, एक्टर कैसे है, क्लियर. सम एक्सटर्नल एंटिटी बता दिया, एक्टर कैसे है, बार स्कैनर, बार कोड स्कैनर, प्रिंटर. नाउ अ सिस्टम, एक सिस्टम कैसे एक एक्टर हो सकता है. कैन यू थिंक ऑफ एंड गिव मी एन एग्जांपल. Like we took the example of that application, banking application. When it hard prompts that you have to change your password, it is an actor. एक मिनट, सॉरी, दोबारा बताना परम. Like when there is a application that is we took the example of a banking application, हाँ and जी. when it hard prompts that you have to change your password, so that is then it is acting as an actor. ओके, ठीक है. और कोई एग्जांपल. सोचो, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट यार. सोचो. Is reminder it's an actor? रिमाइंडर, यस. अगर रिमाइंडर आने के बाद कुछ प्रोसेस शुरू हो रहा है, देन
Yeah, because I get the meeting reminders every half an hour before every day. So it's a vector. It बट is उसमें ना वो तो इट्स एन एक्टर फॉर स्टार्ट योर वर्कफ्लो कि अच्छा मुझे एप्लीकेशन का वर्कफ्लो थोड़ी स्टार्ट कर रहा है वो. बट एप्लीकेशन में भी तो होता है ना, यू पुट द रिमाइंडर तो इट स्टार्ट वर्किंग सम. हाँ बिल्कुल, क्रॉन जॉब्स होती हैं. या सो दैट इज एन एक्टर राइट. हाँ बट थोड़ा सा और बेटर एग्जांपल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. और चलो मैं बताता हूँ. आपने यूज नहीं करी होगी ना इनकम टैक्स इंडिया इनकम टैक्स की वेबसाइट नहीं गिरी है ना. ठीक है, वहां पे एक अच्छा एग्जांपल था. और एटीएम का एग्जांपल ही लेते हैं. जब एटीएम में कोई ट्रांजैक्शन होता है, एटीएम इज वन सिस्टम इन इटसेल्फ. ठीक है, जब एटीएम में कोई ट्रांजैक्शन होता है देन एटीएम का सर्वर कम्युनिकेट्स विद द बैंकिंग सर्वर. ठीक है, सो एटीएम सेंड्स अ ट्रिगर टू द बैंकिंग सिस्टम कि ये ट्रांजैक्शन इज कंप्लीट. राइट, नाउ अपडेट द लेजर ऑफ दैट इंडिविजुअल. ठीक है, तो वो प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो रहा है इन द बैकग्राउंड बिकॉज टू सिस्टम्स आर कम्युनिकेटिंग and one system is acting as an actor which is initiating the workflow of another system. So ATM is sending after the transaction is complete. मैंने 100 रुपया निकाल लिया 100. ठीक है, $100. ठीक है, तो वहां पे it will trigger a workflow in the banking system that okay go and update the ledger of this person. तो वहां पे एक एंट्री आ जाएगी, 100 रुपए डिडक्ट हो जाएंगे, मेरा बैलेंस अपडेट हो जाएगा. So that workflow, this is one example. और बहुत सारे examples हैं. बहुत सारी applications में ऐसा होता है कि you click somewhere and then it redirects to the another application. जैसे आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, ठीक है, you click on a video and it opens up a video. Video is basically there you get an embedded video और वो embedded video YouTube में खुल रहा है जाके. When you click on a website on that particular video link, it opens up it first launches the YouTube app and then opens up, plays in the YouTube application. So one system, one application is sending a request or triggering the workflow to the another application. So this is what system is acting as a instructor. No, sorry, instructor नहीं, actor. ठीक है, so clear तीनों. Okay, has a goal in using the system. Obviously कोई भी workflow you are starting it with some end goal. No, you are starting a workflow of a ATM to withdraw the money or check the balance. कुछ ना कुछ तो business reason है. Why did you come to the ATM? Okay, goal. So actor clear हो गया, and the goal what actor wants to achieve by interacting with the system. तुम्हें तो पहले बता दे फॉर्म, ये तो गोल जनरल डेफिनेशन ही गोल वाली है, इसमें नथिंग आईटी वाला कुछ नहीं है. ओके, एनी क्वेश्चन? बढ़िया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूज केसेस बहुत पढ़ लिया यार हमने अभी, ये तो बता देंगे सब एक एक. सी यार कोई भी these documents है ना, यूज केस, रिक्वायरमेंट, स्पेसिफिकेशन, the common objective is to have a common understanding of an application.
to document the requirements. Document the requirements of a proposed system in an easy to read, easy to track text format. ठीक है? So easy to read format में होता है. You understand the workflows, you understand the cases. That's one reason. Another reason, another objective is serves as a communication tool. It's a communication tool. It develops a common understanding across all. Maybe see, you can say that avoid communication gap. हम सब same document refer कर रहे हैं. वो if there is an update, the same document is being updated and you get a newer version with the updates. So each one of us is referring to the same document. So there is no point that we can of happening communication gap. ठीक है? Otherwise, मैंने विवेक को कुछ बताया, वो परमवीर को कुछ बताएगा. You understand what communication gap is. ठीक है? तो वो requirement जो है ना, as it is, सबके पास चली जाती है. To identify business decisions, actions, and constraints. What are the business decisions? What are the actions? What are the business constraints? वो भी हम use case document में करते हैं document. ठीक है? Business constraints. ठीक है? Important चीज है. ठीक है? Example business constraint का. Business का constraint ये है कि RBI की guideline है for the banks that when you add a new pay in your account, you cannot make a payment for first half an hour. Okay. It's a requirement, constraint for an RBI. Okay. अब इस constraint को how do you handle in your application is up to you. ठीक है? कैसे यूजर को ब्लॉक करना है, क्या मैसेज देना है यूजर को if user tries to do it. ठीक है? So business constraints और भी बहुत तरह के हो सकते हैं. ठीक है? I just gave you one example, but और भी regulatory. Normally constraints are because of the regulatory and other compliance things, right? Represents the goal of an interaction between an actor and the system. Okay, what is the goal that person is or the actor is going to achieve through this? Records a set of paths, flow of events, and traverse an actor from a trigger event to the goal or success scenarios. So you get a step-by-step workflow, right? Okay, what action user is performing, I'm sorry, and what are the results application is giving, right? Step by step, आपको you get the flow of events, right? Okay, next. Okay, now we reach to the components of use cases. Akhil, can you go back to the previous slide? Okay, so the last point, records a set of paths. Okay, records a set of paths means in a use case na, you find three type of workflows. One is basic workflow, another is alternative workflow, and third is exceptional workflow. Okay, so the goal is to withdraw the money from an ATM. Okay, that's the goal. So the basic workflow for this goal will be user swipes the card, enters the valid pin, valid कर रहे हैं सब कुछ, sunny day scenario. Okay, आपको मैंने पहले भी एक बार बताया था. Basic workflow is a sunny day scenario, smoke test case. ठीक है, जिसमें हम सब अज्यूम करते हैं कि सब यूजर सब कुछ ठीक ठीक करेगा, गलत नहीं करेगा जानबूझ के. तो enter valid pin, enter valid amount, right, and money is withdrawn, money and user makes merry. Alternative flow, user swipes the card, enters invalid
number, then application prompts that enter valid pin. In a second attempt, he enters a valid pin number. Then he says, okay, let's check the balance first. Then he finds, okay, balance is hai mere paas. Then he comes back to the withdraw workflow and withdraws the money. Okay. ये alternative path हो. थर्ड आता है exception path. Exception workflow में क्या होता है? कुछ ना कुछ exception हो गए. User swipes the card, right, and enters a valid pin, but when enters a valid amount and when ATM was processing the transaction, power failure happened, which is what? Is an exception. Okay. So us case mein, what should be the expected result? What should be the actual result? Okay. And then in these cases, basic flow का हमेशा one flow होता है. Basic flow will always be one in any use case document. एक ही होगा, यूजर आया तो गोल है पैसा निकालना, उसने सब कुछ ठीक 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 किया, पैसा लेके चला गया. Alternative flows could be multiples, 1, 2, 3 or more. Okay. जैसे हमने एक की बात की, entered invalid, then entered in a valid in the second attempt. ठीक है. फिर हम दूसरा alternative workflow बना सकते हैं, entered a valid pin but went into the another workflow to check the balance. इस तरह से और बहुत सारे हो सकते हैं. वो अल्टीमेटली निकलवा पैसे ही रहा, लेकिन कुछ और अल्टरनेटिव तरीके से, राइट. अच्छा, एंड देन द एक्सेप्शन में भी देयर कुड बी मोर देन वन एक्सेप्शनल वर्कफ्लोज. ठीक है, गॉट इट. क्योंकि एक्सेप्शन मैंने आपको एक एग्जांपल दिया ऑफ पावर फेलियर का. ठीक है, देयर कुड बी मोर एग्जांपल्स. मतलब आई डोंट नो, गंदा एग्जांपल दूं तो चोर आ गए या कुछ, मतलब इस तरह के एक्सेप्शंस हो सकती है ना. डाकू आ गए, गब्बर सिंह आ गया. कि अगर पैसे ही ना निकले, अगर सर पैसे ना निकले, देखो पैसे अकाउंट में से डिडक्ट हो जाए सारे, पैसे नहीं निकलेंगे हरप्रीत, तो वो एक्सेप्शन नहीं होगी ना. अगर आपने अमाउंट डाला एंड वेन्यू से कि ठीक है आपने एंटर कर दिया वैलिड अमाउंट डाल के, देन इफ इट विल नॉट हैव सफिशिएंट बैलेंस, देन इट विल गिव यू एन एरर ना. मैसेज देगा कि नो सफिशिएंट बैलेंस. ठीक है, चेंज द अमाउंट. ठीक है, दैट आई वुड कॉल अ अल्टरनेटिव फ्लो हो गया, वो एक्सेप्शन नहीं हुआ. नहीं, अगर सर अगर अकाउंट में बैलेंस भी है और फिर भी निकल जाए, कैश ना निकले और उसमें मैसेज आपके पास शो हो, अकाउंट में बैलेंस है और फिर भी पैसा नहीं निकल रहा है, तो देयर इज समथिंग एक्सेप्शनल हैपनिंग. और वो एक्सेप्शन क्या है, वी नीड टू गेट टू नो दैट. तो एक्सेप्शन वर्कफ्लो में हमें एक्सेप्शन पता होनी चाहिए कि क्या हो रही है. ठीक है, आप जो कह रहे हो इट इज फाइन कि पैसा है अभी लेकिन फिर भी पैसा विड्रॉ नहीं हो रहा है. तो समथिंग एक्सेप्शनली हैपेंड, some exception is happening, but what is that exception we don't know. So in a use case document that exception needs to be captured कि वो exception क्या है. ठीक है, so गब्बर सिंह आ गया, that could be one exception. वहां पे देखना पड़ेगा कि वो गब्बर सिंह आ गया. ठीक है, और उसके बाद होता क्या I don't know, वो देखना पड़ेगा क्या सिनेरियो बनता है exception का. but exception के cases में you can write multiple test cases, right? So we will discuss in the later slides. I will ask you to give me the scenarios. Okay. On this one, exception workflow pe. Okay, move ahead. Components of use cases. So when we will open a use case document, we will see these components. जैसे हमने test plan के components देखे थे ना, similarly these are the components of the use case. Use case का नाम होता है something like use
underscore login functionality का नाम underscore 001 version whatever it is. use case का number होता है, versioning, number, version, one and the same thing. Summary is so for one functionality. So normally for one business requirement, there is always one use case. So in that summary, they mention that, okay, this use case is for withdrawing the money from ATM. Okay. This use case is for some other workflow. Okay. So उसका एक ही goal होगा लेकिन हर एक use case में. Associations and dependencies. Sometimes one use case has dependency on other use cases. For example, आपका एक use case है on a login functionality, and another use case is on a compose and send an email. So, जो compose and send an email है, this use case has a dependency on the login use case, क्योंकि you can only start a workflow of composing and sending an email if you have a valid account and you can successfully log into the application. So uski dependency hogi. Okay, then actors, you identify ki is use case mein who all are the actors. Then stakeholders are not necessarily need to be identified, but in case of business requirements, you need to identify who all are the stakeholders. ठीक है, तो कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जहां पे अप्रूवल प्रोसेस होता है, स्पेशली द गवर्नमेंट एप्लीकेशंस. ठीक है, कि आपके पास you applied for a license, ठीक है, in an RTO. तो how internally that license is being processed? पहले आपने you submitted it to the clerk, ठीक है, clerk ने आपकी entry कर दी system में. That's what is that? जो clerk ने entry करके enter button दबा दिया, वो क्या है? We talked about it. Actor is an action. Clerk is an actor, right? जो That उसने is a start use किया, case. वो क्या? Use case. He triggered. Triggered That's a a use. trigger कि उसने वो डाल दिया and trigger. अब second step जो है is an approval process. ठीक है, आपने फाइल कर दिया, आपका लाइसेंस एप्लीकेशन फाइल होगी, बट उसके बाद कोई अप्रूव करता है उसको, ऑफिसर, आरटीओ ऑफिसर और कोई भी है. ठीक है, तो दैट एप्लीकेशन गोज टू द क्यू ऑफ एन आरटीओ. ठीक है, अब उस क्यू में अब when he approves your application, end user gets a notification on SMS. So in this particular scenario, hum individual who applied for a license is not an actor, क्योंकि actor तो clerk है. Somebody who is approving the license is not an actor, क्योंकि he is not starting a workflow. But the officer and the applicant are directly or indirectly are being impacted by the application, the events that are happening in the application. अगर reject होता है तो कौन impact हो रहा है? Applicant. अगर accept होता है, approve होता है, who is being impacted? Applicant. Approval. Approve कर रहा है, there are things that कि कितने approve करता है. There may be some condition from the government side कि one RTO has to at least approve these many licenses on a daily basis. करना है, काम खत्म करना है, otherwise लोग करते नहीं है. ठीक है, उसका भी कोई ना कोई criteria होगा, parameters होंगे. So stakeholders, applicant and approving authority, RTO, here are stakeholders. They are not actors. तो उसमें हमें स्टेक होल्डर्स का भी पता चलता है, कौन कौन स्टेक होल्डर्स होते हैं.
Then business rules and constraints. Business rules क्या क्या हैं? We talked about a bit इसके बारे में, and constraints के बारे में. ठीक है, बिजनेस रूल्स बहुत सारे हो सकते हैं ना यार, कि 18 साल से कम वाला कैन नॉट अप्लाई. इट्स अ बिजनेस रूल, मतलब वी कैन कंसीडर इट एज अ बिजनेस रूल ना. ठीक है, अब इस बिजनेस रूल को हाउ डू यू कंट्रोल इन द सिस्टम इज, ठीक है, यू गेट इट validated from the APIs of a आधार नंबर. जैसे आधार नंबर डालते हैं एप्लीकेशन जो है, सो वेरी गुड एग्जांपल अगेन. जैसे आपने आधार नंबर डाला एक एप्लीकेशन में, अभी क्या होता है, आधार डेटाबेस इज देयर विद द गवर्नमेंट. ठीक है, अब द मोमेंट यू एंटर आधार नंबर, तो वन एप्लीकेशन जहां पे आप आधार नंबर डाल रहे हो, इट इज वैलिडेटिंग कि यूजर इंफॉर्मेशन सही है. सो आधार नंबर आप डालते हो, द मोमेंट यू एंटर एन आधार नंबर एंड हिट्स द सबमिट बटन, this application A, which is licensing wali, it communicates with the Aadhaar database application. तो आधार की जो database application है, the APIs are open. Using those APIs, this application can have an access to the particular Aadhaar card. ठीक है, और आपको वहां से you will get to know कि ये तो 18 साल का है नहीं, रिजेक्ट करो इसको. ठीक है, या फिर इसका एड्रेस वैलिड नहीं है, रिजेक्ट करो इसको. ठीक है, सो दिस इज व्हाट आधार कार्ड नंबर यू आर एंटरिंग इन द, सो वन सिस्टम, दिस इज वन लाइसेंसिंग सिस्टम इज ट्रिगरिंग अ वर्कफ्लो इन अनदर सिस्टम. सो ये क्या है, लाइसेंसिंग वाली एप्लीकेशन इज व्हाट, Alternative workflow. एक्टर. Actor. सिस्टम एक्टर 3 तरह के बताए थे ना. सिस्टम हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, क्लर्क वाज इंडिविजुअल. ये एप्लीकेशन जब आधार वेरीफाई करने के लिए जा रही है, इट्स अ सिस्टम, और अ डिवाइस और अ पेरिफेरल. ठीक है, जैसे बारकोड स्कैनर. ठीक है, तो बिजनेस रूल्स एंड कंस्ट्रेंट्स. देन प्री कंडीशंस. ठीक है, तो प्री कंडीशंस होती हैं टू स्टार्ट अ वर्कफ्लो, टू स्टार्ट अ particular, to trigger a workflow, there are always a preconditions. Preconditions are like ki user should have a valid account number, user should have a for ATM वाला workflow. ATM वाला example यार मेरा favorite है. ठीक है, so for ATM वाला workflow, क्योंकि इसमें ना somehow सारे सिनेरियो, सब चीजें कवर हो जाती हैं. तो ATM वाले में the precondition is what? Constraints, what we can say, constraints. नहीं, constraints तो होंगे अलग से, but precondition क्या होगी? Password. The password should be. कार्ड रिक्वायरमेंट हाँ. और यूजर आईडी, कार्डलेस विड्रॉल. 7:38 हो गया अखिल सर. इट्स अ टाइम टू टेक अ ब्रेक ना. पहले I precondition was तो waiting for you to complete this slide and then I would have मैं told तो you. कह रहा हूँ कि लेट देम थिंक. ब्रेक में भी इनको जीने नहीं देना मैंने. ठीक है, चलो ये कर लेते हैं. तो अच्छा, क्वेश्चन क्या था? प्री कंडीशन. अरे यार, प्री कंडीशन ये है कि यूजर शुड हैव अ वैलिड ATM कार्ड. ठीक है, which is not expired. ठीक है, ये प्री कंडीशन है. I think विवेक ने यही बोला था शायद. He said it right. हैं विवेक, तुम यार रोहतक से अभी नए नए आए ना, तो मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा हूँ. Somebody Sorry, said I was not able to recognize Vivek Param said card. Yeah, I think Vivek said it.
अच्छा ठीक है। यही बोला था। Vivek said. I did not. विवेक ने तो कार्डलेस भी बोला था, which was an alternate flow. It could be an alternate flow. अच्छा कार्डलेस वाला, हाँ वो सब बट एटीएम्स में तो अभी कार्डलेस वाला आया नहीं है ना, वो नहीं, तो आ गया है सर। पीओएस पे ही है अभी तक। नहीं, ये कार्डलेस विड्रॉल हो सकता है, कार्डलेस डिपॉजिट भी हो सकता है, काफी कुछ है। आप आओ कभी चंडीगढ़ कैथल मेट्रो सिटी, क्या पता आपको। अभी यूएस में नहीं हुआ यार, है ना जसपिंदर? यूएस में 10 साल पहले हो गया होगा सर, इंडिया में वो I don't go to ATM. I use Paytm wallet and UPI. Yeah. हम ज्यादा पैसे वाले लोग हैं ना सर। चलो लेट्स कंप्लीट दिस स्लाइड। ओके ठीक है। अच्छा ट्रिगर्स तो आपको पता ही है यार, क्या बताना है इसके बारे में। फ्लो ऑफ इवेंट्स हमने डिस्कस कर लिया, 3 तरह की होती हैं। हरप्रीत, फ्लो ऑफ इवेंट कौन कौन कितने तरह की होती हैं? सर बेसिक, ऑल्टरनेट और एक्सेप्शनल। बढ़िया, नोट्स बना रहा है लड़का, पढ़ के बोला है। नहीं सर, ठीक है, गुड। ओके, फायदा हो गया। पोस्ट कंडीशंस, कैस मारो यार पोस्ट कंडीशंस। एटीएम की पोस्ट कंडीशन। फॉर एवरी वर्कफ्लो, तो हरप्रीत ने हमें बताया अभी, बेसिक वर्कफ्लो, ऑल्टरनेट वर्कफ्लो, एक्सेप्शन वर्कफ्लो, देयर विल बी सम पोस्ट कंडीशंस ना। So post conditions, if a basic workflow, post condition will be पैसा sorry money withdrawal हो गया ठीक है, happy। alternative flow में post conditions could be different. exceptional flow में post condition is अलग अलग हो सकती हैं कि post condition in exceptional workflow ना depends कि exception किस moment पे हो रहा है। अगर तो आपने कार्ड डाला ही था और इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो गया, तब पोस्ट कंडीशन डिफरेंट होगी कि जब इलेक्ट्रिसिटी वापस आएगी तो आपको किस स्टेट में मिलेगा एटीएम। तो एक्टर का तो गोल ही नहीं अचीव हुआ वहां पे। नहीं हुआ ना अचीव, तो एक्सेप्शन में थोड़ी ना होगा। हाँ जरूरी थोड़ा है कि गोल अचीव हो ही जाए, हो सकता है अल्टरनेट में भी ना हो। हाँ, वो तो बेसिक में भी हो सकता है। बेसिक में तो होगा ही होगा। बेसिक में तो मतलब ही है ना कि हैप्पी पाथ सनी डे। ओके ओके ओके, आई हैव टू राइट इट डाउन। तो इन एन एक्सेप्शन डिपेंड्स कि यार पोस्ट कंडीशन डिपेंड्स कैसे डिपेंड करती है कि अगर कार्ड स्वाइप ही किया था, लाइट चली गई, बट जब लाइट वापस आई तो कुछ नहीं था, नॉर्मल आपके ऑन एन एटीएम यू गेट टू द वेलकम स्क्रीन, ठीक है, एंड नथिंग हैपेंड। बट exception happens when the transaction was in process, ठीक है, कट 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 की आवाज आ रही थी, नोट गिन रही थी मशीन, और तब हो गया। उसके बाद पोस्ट कंडीशन क्या होगी? एप्लीकेशन वापस आ गई, बट जब लाइट गई तो वो ट्रांजेक्शन वाज इन प्रोसेस, आपको मैसेज आ गया पैसे कट गए, ठीक है। अब व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी रिज्यूम्स, ठीक है, रिस्टोर्ड, देन what should be the post condition? Post condition should be ATM should cut back to the normal welcome screen, okay, and your transaction should be reverted, okay. So that is the post condition. So post conditions are different scenario में होती हैं, और इन्हीं post conditions के different होने की वजह से you write different scenario based test case। यहाँ पे हमें सोचना है कि हमें क्या क्या पोस्ट कंडीशंस में प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके लिए हम टेस्ट केस लिखें। वी नीड टू टेस्ट इट कि ये भी हो सकता है, लेट्स टेस्ट इट यार। यूजर को नहीं मिलना चाहिए चीज, हमें टेस्ट कर लेना है पहले ही। सो एंड देन द एसोसिएटेड यूज केसेस, दिस इज रेपिटेशन एसोसिएशन, हमने पहले भी डिस्कस किया है ऊपर। तो ओके, क्वेश्चंस? स्पिंडर परम, ठीक है, तो लेट्स टेक अ ब्रेक।
19:44 7:44 हो गए हैं. Let's meet at 7:50 after 6 minutes. Okay. See you.
Any questions so far, दोस्तों? It may seem a little confusing. It may seem a little wayward कि क्या यार इतने basic flows and all that. So देखो, the main point here is that in this document ना आपको क्या मिलेगा? You will get something which is known as a basic flow, which is when you are doing your testing, even in the agile world ना, you will hear this terminology that we have to test the happy path scenarios today. Those happy path scenarios are nothing but the basic flows of this particular functionality, which will mean that 80 to 85% of the users are going to use this application in this way. And if the application is up and running, if there are no exceptions, so ये happy paths हैं, ये basic flow है that most of the users are going to execute. In case of those exceptions, which can happen through because of the system, because of the user, and whatever Vishal sir told, then we will go into those alternate paths. कि अगर ये failure हो गया हमारा, what is the workaround through which I can still continue, or what is the workaround, what is the alternate path through which I can get out of the system successfully, or through a failure case which tells me that हाँ अब system एक ऐसे point में पहुंच गया है from where it can recover itself, or from where that user can move forward with the next flow. So this is happy path, alternate path. आप खाने जा रहे हो पिज्जा, that is your basic flow. जाके देखा पिज्जा हट तो बंद हो गया, then you plan किया साथ में मैकडी की दुकान है, let's go to the alternate path and eat burger. अब अगर मैकडी की दुकान पे भी बोलता है वो बंद हो गया, then there is a failure. You have to change your plan, come back home, पराठे खाओ बना के. तो विशाल सर आगे, he's serious about it. I was just kidding around. Okay, so the component. Anji. Sorry sir, but I liked that MacD की दुकान. दुकान नहीं है. अब वो एक बर्गर का और एक और ब्रांड है यार यहाँ पे, उन्होंने बहुत का बर्गर का नहीं दे बर्गर किंग, बर्गर सिंह. सर बर्गर सिंह भी है, वो गुड़गांव दिल्ली में ज्यादा है. यहाँ पे है, दे कंप्लीटली इंडियनाइज्ड द बर्गर. उसके अंदर जो सॉसेस डाल रहे हैं ना वो पूरी, मतलब उसके अंदर जो टिक्की भी है एकदम मतलब स्पाइसी, और वो सब बिल्कुल इंडियनाइज हो गया. तो पिज्जा की यहाँ नहीं होती जितनी इंडिया में मिल जाती है. इंडिया में ज्यादा है यार, ऑब्वियसली. वहाँ होता क्या है, मैकडी में बॉइल्ड आलू खाना पड़ता है. Boiled out आलू सर. 2007 की बात है. I went to McD with my 4 non-vegetarian friends. और हम लोगों ने बर्गर ऑर्डर किया. Everybody was पता नहीं क्या क्या ordering something. I was seeing through veg options. मेरे को मिला एक चीज बर्गर. I ordered that. मैं क्या चीज बर्गर खाते हैं. पता क्या आया, क्या एक नीचे बन, एक ऊपर बन, और बीच में चीज की स्लाइस. No, cheeseburger here is like a beef patty. Because when I came वो बोला था चीज बर्गर. वो हटवा दी ना. वो नो मीट करने के बाद में वही बचा है, चीज स्लाइस बचा हुआ है. ये बड़ा प्रॉब्लम होता है उधर. It happened with me too, because we were going outside and they was like, what do you want to eat? I want a cheeseburger. I said, do you know what is cheeseburger? I said, no. It's a beef patty inside it. I said, why they said a cheeseburger? बीफ तो उनके लिए वेज है. आप बहुत मतलब you have to be very specific. No meat. No हर meat. जगह. Oh, you are vegetarian? सर बीफ ट्राई किया आपने? Pure veg. I tried, but I didn't taste. I didn't. जर्की खाई थी मैंने एक बार. I tried. You tried? Chickentarian. Okay. I tried jerky once. मेरा friend है, वो they can eat anything. Yeah. Alien Common friend है मेरे और अखिल के, मतलब बहुत हमारे close group है. वो बंदा मार के खा जाए. सरदार है वो भी, हरप्रीत, और मतलब they can eat anything. My friends ate everything. They eat beef, pork, everything. कच्चा दे दो उनको, कच्चा वो कच्चा भी खा जाएंगे. वो गाय पे पकड़ के. When you go to the steak restaurant, something, or it's like uncooked beef. चलो, let's come back. Get back to use cases. Okay, so this is done. Use case document, actually, sir, can you open for us? Computer G. Sure, sir. Oh, wow, I'm computer चाचा चौधरी बना दिया था. नहीं, मैं आजकल करोड़ में after this
सेशन ना, आई वॉच कौन बनेगा करोड़पति, केबीसी, तो थोड़ा सा अमिताभ बच्चन वाला है। आई वॉच कपिल शर्मा, पूरे दिन कौन बनेगा करोड़पति चलता है अपने प्रोजेक्ट्स में। ओके, डॉक्यूमेंट खोल नहीं रहा है क्या ओपनिंग कंप्यूटर जी? ओपनिंग सर, टाइम लग रहा है यार। टीम्स, स्लैक, जूम, आउटलुक। एम आई नॉट शेयरिंग माय स्क्रीन? दिखा क्या? आई गॉट लेट यार, वो क्लाइंट हैड पिंग कि ये वाला जो है भाई, ऐसी हालत है ना, मैं तुम्हें बताऊं, कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव है एट द क्लाइंट साइड, वो टेक्निकल कस्टमर सपोर्ट, उसको मैंने एक रिक्वेस्ट डाली आज कि भाई अडोबी एयर अनइंस्टॉल इट फ्रॉम द सर्वर। अब वो मुझे भेज रही है अडोबी एक्रोबैट रीडर का आइकन और बोल रही है कि शुड आई अनइंस्टॉल दिस। मैंने कहा नहीं आंटी, रुक जा रुक जा। मैंने कहा आई कॉल यू। सो अभी ब्रेक में आई कॉल्ड हर और मैंने उसको बोला मुझे कंट्रोल पैनल एड प्रोग्राम का फोटो दिखा दे। और मजे की बात यह है कि उसके पूरे लिस्ट में अडोबी एयर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ही नहीं है, उस सर्वर पे अडोबी एयर है ही नहीं, और टिकट हमें ये साइन था कि अडोबी एयर क्यों इंस्टॉल करो। लीव इट यार, मतलब दीज आर स्टोरीज चलती रहेंगी, बट ऐसे ऐसे हालात हैं। ओके ओके, सो दिस इज अ यूज केस डॉक्यूमेंट टेम्पलेट। देख लो, दोबारा दिखेगा नहीं। सो जो जो हमने बातें की है ना कंपोनेंट, वो सारे कंपोनेंट यहाँ ढूंढ लो, ऊपर आएंगे अखिल सर। देखो प्रोजेक्ट नेम है ये, यूज केस डॉक्यूमेंट है, वर्जन यहाँ लिखा हो 0.2। व्हाट डज 0.2 इंडिकेट? बहुत बार बताया भाई, नीड दिस आंसर। वर्जनिंग बताई थी अखिल सर आपने इनको? नहीं Yes. नहीं, वर्जिंग बताइए हो बताइए। बताइए 0.2 means it has been changed once and now this version is 0.2, and whichever would be baseline it would be 1.0. Till then it would be 0.2, 3, 4, 5, 6. What? Very How good. many changes? Number of changes. बढ़िया, गुड। सो इट इज नॉट अ बेसलाइन वर्जन, इट्स अ ड्राफ्ट वर्जन। ठीक है, ओके। देन कम टू रिवीजन हिस्ट्री, टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, रिवीजन हिस्ट्री तो आप देखोगे, गो अप गो अप गो अप। रिवीजन हिस्ट्री में डेट, वर्जन, author and contact information. Author is this your system analyst, okay, or yeah, business analyst, sorry, not system analyst. Okay, go down, go down, go down, go down, order, order, order. तो ये जो यूज केस है, इट इज अराउंड ऑर्डर, ऑर्डर वर्कफ्लो, कि कहीं पे ऑर्डर कैसे होना है। ठीक है, तो समरी, इफ यू लुक एट द समरी, यहाँ पे लिखा है यूजर कैन मैनेज ऑर्डर डिटेल्स इन दिस सेक्शन। The details could be related to the ordering a CD-ROM, payment details and shipping orders. So देखो order जो है CD-ROM का हो सकता है, order के through you can manage payments and order के through you can manage shipping order. Order आ गया, then you have to ship it and order workflow. Actor कौन है? Actor is an admin, client services and school admin. ठीक है, so ये I think school admin I don't know क्यों है इसमें, ये अच्छा स्कूल के लिए है एप्लीकेशन ये, तो स्कूल एडमिन। अच्छा, प्री कंडीशंस देख लो, आपको यू विल गेट टू नो। प्री कंडीशन इज यूजर इज लॉग्ड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, क्योंकि ऑर्डर जो यूजर के बिहाफ पे जो ऑर्डर प्लेस कर सकता है, ही हैज टू लॉग इन थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स। यूजर क्लिक्स ऑन द ऑर्डर टैब टू एक्सेस द ऑर्डर डिटेल्स। ठीक है, तो दैट्स व्हाट द प्री कंडीशन इज। देन द वर्कफ्लो, manage CD-ROM. This section allows user to manage the CD-ROM details. Manage payment. This section allows the user to manage the payment options. And manage shipping order. This section allows the user to manage shipping orders. So order से ये सारे workflow जो है वो trigger हो रहे हैं once you enter an order. और ये सब आप access करते हो। So एक बार go down okay. इस केस में there is no alternate path.
ऑल्टरनेट पाथ नहीं है, ठीक है। एंड पोस्ट कंडीशंस विल बी यूजर विल हैव एक्सेस टू ऑर्डर इंफॉर्मेशन, यूजर के पास ऑर्डर एक्सेस करने का, once an order is placed then user will have order place हो गया, उसके बाद क्या होगा, user will have access to order information। आप Amazon पे ऑर्डर कर देते हो या हाँ ऑर्डर कर देते हो, only then you can see that order is placed, और उस ऑर्डर का you can see the detail, बट जब तक आपने ऑर्डर प्लेस ही नहीं किया you cannot do that। So this is what it's a post condition, when order is placed only then you will be able to do this। Sometimes क्या होता है ना, why post conditions are different are important यार, एक वर्कफ्लो में जो इवेंट हुआ है उसकी पोस्ट कंडीशंस कुड बी एट मल्टीपल प्लेसेस। सो ये जो पोस्ट कंडीशंस है ना, दिस इज गोइंग टू बी अ ट्रिगर फॉर शिपिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि उनको पता है कि ऑर्डर प्लेस हो गया, ठीक है, देन दे विल गेट अ ट्रिगर कि हाँ नाउ स्टार्ट द शिपिंग प्रोसेस, ठीक है। सो पोस्ट कंडीशन में यूजर विल हैव एक्सेस टू पेमेंट डिटेल्स। सो बीइंग अ, अच्छा अभी आपको एक चीज बताता हूं, जब आप यूज केस को रिव्यू कर रहे हो ना, यहां आपको रिव्यू कमेंट डालना है, दिस इज हाउ यू थिंक कि पोस्ट कंडीशन में इसने ये तो डाल दिया कि user can access the order details, user will have access to the payment details, user will have the access to the shipping order details, मान लो ये mention नहीं है यहाँ पे, तब आपको you need to go back and ask this questions that in a post condition shipping के भी होना चाहिए क्योंकि उसका workflow जाना है आगे, start होना है, ठीक है। So that's a purpose, क्योंकि BA is ultimately a person ना, he can make mistakes, so that's the reason that we review it, कि उसने कुछ मिस किया है तो हम वो भी ऐड कराएं, तो ये भी तो पोस्ट कंडीशंस होगी, यहाँ पे है बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। यूजर विल हैव एक्सेस टू शिपिंग ऑर्डर डिटेल्स, ठीक है। तो वंस Amazon वाला ही एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है, यू कैन हैव एन एक्सेस टू योर ऑर्डर डिटेल्स, यू कैन हैव एन एक्सेस टू योर पेमेंट डिटेल्स, पेटीएम से किया है, कार्ड से किया है, नेट बैंकिंग से किया है, यूपीआई से किया है, ठीक है। यू कैन हैव योर इनवॉइस डाउनलोडेड, इनवॉइस भी आप देख सकते हो। देन नेक्स्ट इज आप यू कैन ट्रैक ऑर्डर, यू कैन क्लिक ऑन ट्रैक ऑर्डर, वहां से आप ट्रैक कर सकते हो शिपिंग डिटेल्स, ठीक है। एंड दीज आर ऑल द पोस्ट कंडीशंस। एक्सेप्शंस फ्लो, branch admin has access to the CD-ROM order, payment options and shipping order details, right? So exception, तो branch का जो admin order admin है, he can also have an access to the CD-ROM order, payment options and shipping order details, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। The second is order manage CD-ROM, new order। तो new order में क्या क्या है? The school branch places an order to project name for CD-ROMs to keep the CD-ROMs in the inventory and disperse them whenever a student registers for the CD-ROM course। भाई साहब, ठीक है। तो जब स्कूल ब्रांच places an order to project name for CD-ROMs to keep a CD-ROMs in the inventory and disperse, तो वो स्कूल ऑर्डर प्लेस कर रहा है, और when a student enrolls he will be entitled to get a CD-ROM from there। ये है हमारा न्यू ऑर्डर का प्रोसेस। तो ऑब्वियसली एक्टर्स कौन है? एडमिन, सीटी एडमिन, क्लाइंट सर्विसेज, स्कूल। और वर्कफ्लो देखो यहाँ पे क्या जबरदस्त है। न्यू ऑर्डर, ऑर्डर CD-ROM, सिलेक्ट प्रोफेशन टाइप कि ये स्टूडेंट के लिए है, टीचर के लिए है, किसके लिए है। सिलेक्ट शिपिंग मेथड, राइट, शिपिंग मेथड जो भी हो सकता है, अलग अलग वेंडर हो सकते हैं। वेरीफाई एड्रेस इंफॉर्मेशन, कंफर्म CD-ROM ऑर्डर। तो इतने स्टेप्स के बाद आपका कंफर्म, ये है सनी डे सिनेरियो, बेसिक वर्कफ्लो, ठीक है। ऑर्डर CD-ROM नीड्स, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं हम एक्सेप्ट ऑल्टरनेट वर्कफ्लोज क्या होंगे अखिल, एक बार डाउन 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 कम डाउन, यस।
यार ऑल्टरनेटिव इसमें भी नन है, कोई ऐसा वाला फ्लो लाओ जिसमें ऑल्टरनेट हो। पहले इन्होंने सारे बेसिक ही कवर किए हैं। यस, पेजिनेशन इज प्रोवाइडेड इफ द नंबर ऑफ प्रोफेशन डिटेल्स एक्सीड्स 10। ये तो मेरे को पढ़ना पड़ेगा यार वर्क फ्लो। मतलब दिस इज समथिंग रिलेटेड टू, मतलब आपके सर्च रिजल्ट्स जैसे आते हैं गूगल पे ना, हाँ you get some search results which are displayed like 50 items per page, but the number of results that are returned are 1000, तो आपकी pagination होती है. So then you get to get that option that you have to move to page number 2, page number 3, 4, okay, so on to get those search results. कितने रिजल्ट्स डिस्प्ले कराने हैं ऑन अ सिंगल पेज, ठीक है। दैट विल ओनली हैपन व्हेन योर लिमिट कि हाँ ऑफ डिस्प्ले ऑफ द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ऑन अ पेज इज एक्सीडेड। 50 की आपने लगा रखी थी, 51 हो गई, यू हैव टू ऐड अ पेज 2। इस पे एक ही रिकॉर्ड दिखेगा बट पेजिनेशन शुड ट्रिगर। So this is an alternate path. So go down these, this is exception भी है इसमें, there is an exception. Order ID is extended to the payment history detail. तो कुछ exception होगा कि order ID is extended to the payment history detail, I don't know. मतलब ये application की functionality है, but the whole idea is here is to take a feel of this whole use case document, right, how it is. And to answer Param's initial question, this is how detailed the requirement document or the use case document are, Param. Not as simple as what we used in our assignment. That was just for our own example purpose. But if you see here कि कितना detailed जा रहा है, this is how these documents are created. And if we go back to that review form, in that review form, what we do is we mention this section कि हम लोग 1.1.2 को review कर रहे हैं, and this is for this particular functionality, and then you say for this particular functionality, my question is for, let's say, for alternate paths here, and then you will quote this particular sentence in your review form, and based on this particular question, based on this particular section, you will ask your query, your question. So this is just a overview that you have to take of the use case document. Most probably document हम आपके साथ share कर देंगे. Most probably आपको अपने career में you won't get any project wherein you will be getting these type of documents. अब देखो, if you see, ठीक है, use case document मिल गया, all good. We have actors, we have story, we have workflow, we have alternate paths. But based upon this use case document, if we have to create the test cases, so what we are going to do, we have this workflow. So आप पहले तो अपने requirement based test case बनाओगे, RBTs जो बोलते हैं, based on these particular workflows. Then whatever alternate paths you have, then whatever exceptions you have, you are then going to create your scenario based workflows. You are going to create your negative test cases, scenario based test cases, and the negative test cases here. And based on these post conditions, you are going to tell that this is the expected result that I should get out of these particular set of test cases. Any questions here before we close and move back to PPT? Okay, let's get back to the PPT. What next? So use cases we are done. I think the next is user stories. So our Scrum, user story, Agile Safe, Akhil sir will take it. User story is one of that terms that you are going to hear more often as compared to requirements or the use cases or the SRS document. So we just now saw a detailed use case document which was for about 40-50 pages kuch hoga. And each of that section, like order wala section, was about 1 page in length. As compared to that particular use case, here what you see in user story, that whole requirement is summed up in just one single sentence here. If I have a pen here, जो अपन को यहाँ दिख रहा है, as a type of user, I want dash some goal so that some reason happens. So this is how the complete use case has been summed up
into one single sentence user story, which is going to tell here who the user is, the type of the user, the actor that we were talking about. I want some goal. This is the action that I am going to perform so that this particular thing or this particular reason, for this particular reason. So this is the outcome, the post condition of this particular code, of this particular user story. So as an example of a user story, what we can say that as an admin of an application, as an admin of Facebook, I should be able to approve or reject the requests that are coming to the group. This is how the user story will be given to you. Based on this particular user story, you have to review this user story. If you have any questions, go back to the author of this particular user story, which in the agile world, for most of the times, it is either the product owner or the scrum master who is going to write this user story. So go back to them, clarify your doubts, your questions to that particular author, and based on this one single sentence, you have to provide your estimates on how much time you are going to take to create your test cases, execute your test cases. And then once your estimates are approved, then you have to write all of the test cases that you can think of around this particular one single sentence user story. So this is how the whole world of waterfall, we model, whatever we discuss in all of those orthodox models have shrink down into agile, which has eliminated a lot of documentation that was done earlier to the bare minimum. Only the required amount of documentation is done in agile, and that is how the 200-page, 300-page user requirements of the use case documents have come down into one single sentence of that requirement itself. We, in our agile session, we are going to talk about more about what agile is, what user stories are, who creates that user stories, how those are created. वो practical पूरा we will show you in a project management tool through Scrum and Kanban both. So you'll get a more understanding, deeper understanding in that session. But for now, for this particular session, since we are covering here requirements, use cases, and user stories, to have a comparison, this is how you can compare between three of those. 200-300 page ka document in a requirement, then similar size document in a use case, and coming down to a single sentence user story in agile. And for all of the user stories, whatever application, whatever project it is, whatever industry it is, not necessarily an IT industry, but any non-IT industry you may go in. If you're talking about user story, if you're referring user story, this is the only method through which any user story could be written. If we talk about the bookish language, as a type of user, I want some goal so that some reason is accomplished for my project. Again, so this is bookish, कि ऐसा ही follow करना चाहिए, but then it always depends upon the project. They at times they change this language, वो अपने हिसाब से कुछ भी लिख देते हैं. But this is how theoretically we should be writing user stories. Any questions दोस्तों on this user story? So one thing I would like to add here is that what is the reason why we don't have some more detailed, if not 200-page document? Why not we have a paragraph explaining what this user story would be doing, what this functionality would be doing, so that people who are reading, the developers, the designers, the testers, will get a better understanding to it. So you may come across this question in future. So to answer this particular question, what happens? The whole purpose of agile is to collaborate between the team. And when you have such short user stories here given by the product owner or the scrum master, the reason behind it is that people from each of these teams, they interact with other teams to understand or to try to understand what this whole user story is all about. And during that interaction, they come up with new thoughts, new ideas of how the developers can implement this user story.
how the testers can test it more effectively, more efficiently. And around this particular user story, if the whole team thinks that there could be more functionality addition that can happen and which can add value to the application, those suggestions are also welcomed in the Scrum team. So when any of those team members review it, they get a complete understanding not only of this particular feature, but also they get an end-to-end understanding of how this functionality is going to have its impact on this application. That is the reason why they keep these user stories. Every user story is very short. Jao, samjho, do your brainstorming, come out of ideas, give us more thoughts which we can implement in the application. And that is the reason why they don't document a lot in Agile. Okay, we'll cover more during our Agile session sometime in the future. In 3-4 more sessions, I guess we will come to Agile. We can discuss more there. Any questions that you have here on user stories? Okay, I have actually switched off your cameras here. So in case if you are raising your hand, then please unmute and you can talk to me. All right, if not, then just moving ahead. Okay, I think I already covered this thing. So the biggest difference between a user story and the use case here is user story is said to be a lightweight document. I would not even say that this is a document. This is a single sentence definition of what this functionality is going to do, which can be written on a card. We are going to see how we write it on a card. And a user story does not capture all the details. It's an informal support for the discussion. This is what I told you. It does not capture a lot of detail. It just tells kaun kya karne wala hai and what is that impact that is going to happen on this application. And then it opens that door for discussion between the team members from where new thoughts, new ideas can generate. Whereas in a use case, it is going to be a heavyweight document. It describes the normal flow, the basic flow here, the alternate flows, and more details alongside it. A use case capture all details. It's a formal specification. Okay, just if we think about an example though that just came to my mind, if we are talking about that username and the password field, so a use case document will have all details. What are the valid characters that are going to be present in the use case that would be accepted in the username field? What would not be accepted in the username field? What would be the lower bound? What would be the upper bound? Everything would be detailed in here in the use case document. Whereas in the user story, it would again be very short description. As a user, he should be able to log into the application through the valid credentials. That is it, how the login user story would be defined. Now it is up to the developers, up to the designers, up to the testers, how they want to implement it. Do they want to put username password field? Do they want to integrate some type of API, the Google API or the Apple API, however they want to implement it? Again, it is all up to the team, do their discussions, come to that particular understanding and put that understanding ahead of the Scrum Master and the product owner for them to approve. If they are okay, once they approve it, they are going to implement it. So this is how Agile works. This is how the user stories work. This is how the use cases used to work. What are the benefits of user story? It's crisp, very short requirements, low on maintenance. In case if you need to change anything in a use case document, 200-page document, it is going to be again वही versioning वाला सारा का सारा scene लगेगा उसके अंदर, and that is going to take a lot of time, a lot of to and fro between the person who is reviewing it and the author. Whereas in a user story, it is just a single line sentence. If the reviewer goes back to the Scrum Master and tell that we have to change this particular thing here, it would be a very quick thing. Allowing projects to be broken down into small increments. So if you have a bigger, very big requirement or very big project, so through user stories, you are going to create 100 user stories, 50 user stories that would break down the complete project into smaller chunks, which could be taken up as single user stories, and we can start seeing that progress happening as soon as you complete those user stories. And this is very important. Being suited to projects where the requirements are volatile or poorly understood. If
if from the customer end itself, the customer wants that he has this requirement that he has to build a house, let's say, but he is not very sure on how that whole house should look like. What he knows is that on the ground floor he should have 3 rooms. On the first floor he should have a swimming pool. On the second floor he should have again a terrace garden or something like that. How big those rooms should be, what direction the windows should be in, how the doors should be, how the almirahs should be, he is not sure on those requirements. So in that case, user stories or agile is very effective, wherein from our understanding, the scrum master and the other people in the team, they sit down and from their experience, from their understanding, they start creating user stories that the user should be able to open. As a user, I should not have any almirahs in my bedroom. As a user, I should have a dressing room. As a user, I should have almirahs in my dressing room. I should have a walk-in closet. And you can document all of such requirements and go back to the customer. Tell them these are the requirements that we have documented. Then the customer can come up and review and he can say, nahi, nahi, mere ko na ye walk-in closet nahi chahiye. I'm okay with the normal cupboards. So this is how agile, or this is how the user stories are very helpful. If you think of the same scenario, not in the agile world, but in the orthodox model, wherein the requirements are not clear from the customer itself, and they have to now document a 200-page use case document and then go back to the client to get his approval on it. And the client would say कि यार ये 200 पेज के डॉक्यूमेंट में से 175 पेज जो आपने लिखा है, I don't need these requirements. So let's just imagine how much of an effort would have been wasted if you again go back, again you remove those 175 pages of documentation, rewrite new things into it, versus you just have these one-liner user stories that you have to change if the client is not in agreement with the way that you want to design his house, develop his house. And since you have this ability to break down this whole project into smaller chunks using these user stories, so it makes very easy for us to estimate on each and every user story. So we will take this up also, estimating how we estimate each user story. There is a very interesting story behind it of how we do it. It's actually playing poker is what we say when we estimate any of those user stories. So it's more of a game when you do estimate your user stories. So we will cover in our next batch and in our next session on agile. So these were the benefits of user stories. So any questions up till now, friends, you can ask us. Okay, I just got this message from Zoom that participants are now able to see my screen. Was my screen not visible earlier? It is visible. यार ये Zoom की भी टेस्टिंग करनी पड़ेगी लग रहा है. It confused me. विशाल सर is speaking on mute. ये भी नया फीचर डालना पड़ेगा. मैं ड्रॉप हुआ था, मैंने कहा उसके बाद ये रिज्यूम हुआ, इसलिए तो नहीं कर रहा ऐसे. Not sure. Any questions, दोस्तों? Any questions from starting from our Friday session? Requirements, use cases, user stories, because this was one single session which was broken down into 2 different parts. Not Okay, right. so if chalo, not right now, no problems. If you have anything coming up anytime in future, let us know. So let's do this quiz thing again, which would be what we say, which would brush up our क्या हुआ? This is just a brush up thing यार. परम जसविंदर, चलो ready for it दोस्तों? चला ही नहीं, no questions. Okay, now here it is. Okay, use case flows are well suited to non-functional requirements. कितना इजी है. Just विवेक की शक्ल देख के लग रहा है. आंसर देगा इसके लिए. विवेक.
बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इजी। I think false, जो मुझे लग रहा है, but false. Mine is false. मैं तो विवेक से पूछा था। अच्छा, sorry. ठीक है, अभी तो खैर आंसर करेक्ट आया नहीं है, तो विवेक बता देगा। फॉल्स है। ये कौन बोला बीच में false है? विवेकी, मैं ही बोल रहा था, पर श्योर नहीं हूँ मैं। लाइफलाइन यूज करना चाहेंगे आप? बस 3 लाइफलाइन। फॉल्स ही है वैसे। फॉल्स। फोन अ फ्रेंड। ऑडियंस। ऑडियंस नहीं है अपने पास में, सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। फ्लिप द क्वेश्चन। फॉल्स ही है लग रहा है सर। Mine is true. अब आया मजा। We are getting into a debate mode now. Action. कितने फॉल्स हैं, कितने ट्रू हैं? परम इज ट्रू। फॉल्स वाले विवेक, हरप्रीत फॉल्स, जसपिंदर फॉल्स। चलो परम भाई, आप माइनॉरिटी में हो, डालो अपना पासा फेंको। Why you feel this true? It is true because in use cases we will have the details about number of users and how much performance do we need, but as compared to the user stories where we have a single liner, we have to ask everything again and again that how many users do you have, like the assignment which we did on Friday. There it was not mentioned that number of users, how many users, for how many users you are using this HRIS. So if we already know those things, we would be better equipped to write our test cases and better test the application. Okay, so एक पक्ष हमने सुन लिया. Let's hear it from the false people. Why? What is their reasoning behind it? When we say use cases, it's a requirement based and scenario based because of my perspective. Because when we're talking about the requirements are the functional requirements. So where we decide everything, what should be. But so I don't know. This is my answer. That's why I thought it's false. हरप्रीत फॉल्स के साथ है या ट्रू के साथ है? False, false. कर दिया तो false था मेरा। True. ओए कौन जी? विवेक ने skip भाषा पलट ली है हरप्रीत ने। नहीं सर, विवेक ने True आएगा। यार use case flows, software action against the user response. use case flows क्या होते हैं? Use case flows. Clause तो वही बताया था, basic, alternative और exception. Basic, alternative, exception. Basic, alternative and exception flows से how will you make out the non-functional requirements, which are security, performance, transaction time, turnaround time, how many users application is supposed to support. वो सब चीजें तो कहीं भी नहीं है ना, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स तो है ही नहीं, ठीक है? ऑल आर द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स. सो आंसर इज फॉल्स, ठीक है? बट आई लाइक द रीजनिंग दैट परमवीर गेव. Yeah, then I thought it was a true, but then I was stick to my answer because रीजनिंग उसने अच्छी दी है कि हाँ, मतलब वो एक स्टेप आगे चला है कि लोग थोड़ी सी बात करेंगे कि इतने यूजर्स का है, तो वहां से हम फिगर आउट कर लेंगे कि इतने यूजर्स का है तो ऐसे ऐसे परफॉर्मेंस टेस्टिंग होगी. मतलब वो ठीक है, उसका रीजनिंग मेरे को अच्छी लगी, बट आंसर इज फॉल्स, ठीक है? See, for non-functional requirement is a separate document altogether. ठीक है? Non-functional requirement document is separate.
that is used to perform the performance testing. उसके लिए we refer them. ठीक है. In very simple terms, if we see यार, हमको requirements मिलती हैं, we get those requirement documents. Based out of that requirement document, we create use cases, use case document. So requirement के ऊपर use cases हैं, which are functional requirements. All right. So moving on to the next question. QA documents any query in. Review comment form. Very good. Again, the review. डॉक्यूमेंट ठीक है, रिव्यू मतलब वो क्वेश्चन पहले समझ नहीं आया था. QA document कहाँ करेगा अपनी query? It can't be through your emails ना, तो You have to be precise ना. QA engineer. QA is a person. Tester. अभी यार जिससे पूछेंगे वही बताएगा. अच्छा, no rapid fires, okay. A use case can be typically said क्या है? A use case can typically said to a scenario recorder. सिंपल है यार, बहुत सिंपल है. मेरे को ही नहीं समझ में आया what is question. Use case SBT और RBT में बहुत प्रवचन दिया है मैंने आज. said to be आना चाहिए ना, said to be a scenario recorder. हाँ. ये जानबूझ के छोड़ा है, ये लोग पकड़ते हैं डिफेक्ट ग्रामेटिकल की नहीं. Still not clear on the question what is asked. यूज केस डॉक्यूमेंट क्वेश्चन ही चेंज कर देता हूँ. यूज केस डॉक्यूमेंट इज यूज्ड टू राइट डैश टेस्ट केसेस. दोबारा बोलना. यूज केस डॉक्यूमेंट इज यूज्ड टू राइट डैश टेस्ट केसेस. This is डैश भी तो भरना है. अच्छा वही है. SVT एसबीटी का फुल फॉर्म क्या है? Scenario based test cases. scenario based. हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा है. यूज केस कैन बी टिपिकली सेट टू बी अ सिनेरियो रिकॉर्डर. Yeah, it's true. तो बेसिक फ्लोज, अल्टरनेट फ्लोज, वो क्या है? सिनेरियोज ही तो हैं. ओके, बट ये सिंपल था यार. ओके, नेक्स्ट. Comment on a role of a tester. Comment on a role of a tester in reviewing use cases. अरे अरे ये तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है. सब्जेक्टिव आ गया. छोड़ दो Assignment. इसको. ऐसे कर. Assignment. ठीक है. Yeah, we can cover it right away यार. क्या assignment कर लो यार. We can, हाँ. Or you can do more than 50 words. एक एक लाइन बता दो सारे. वन सेंटेंस सबसे. ठीक है. लेट्स स्टार्ट विद जसपिंदर. Rule of I'm a asking. tester. Comment on the role of the tester in reviewing the use cases. आप पहले दूसरों से पूछो. That will get difficult for you. It's okay. सब कुछ बता देंगे तो आपके पास कुछ बताने को बचेगा नहीं. Let's see. कौन बताता पहले? परमवीर ठीक है. बताए. For sure. वो तो परमवीर. No, the first line is a tester. Role of a tester in reviewing the reviewing the use cases is. आगे कोई और बता दे. No, Comment actually, करना है, comment. sorry. Okay, comment on the role of a tester in reviewing use cases. Okay, he would try to find out any abnormality in the use cases, like which does not match with the rest of the testing. Like for a developer, it would be for a particular build, whatever he is building, he would be talking about that. So in reviewing the use cases, a tester can look at the integration part, like what are how it is connected to the next scenario, whatever next is to that particular use case. Okay. ठीक है. So
when you are reviewing the test cases, Mhm. what are the things that you need to take care of? What are Use the case, things that you have in mind? reviewing the use case. Test cases बोल दिया था आपने. Okay, use cases. एक से है ना. बोल रहा हूँ. फंक्शनैलिटीज चेक कर सकते हैं. Okay, functionalities. Review कर रहे हैं use cases. You are not executing test cases. So You are reviewing. I was talking like if we are talking exclusively for the tester, what the developer would not see in a use case and the tester would see. In that case, it would be the integration part, that how it is linked to the next step of in the use cases, like the next use case and how it would link to that. हाँ, एसोसिएशन और डिपेंडेंसीज की बात कर रहे हो आप, जो हमने पढ़ा था. That's already one of a component of a use case. But comment on the role of a tester in reviewing the use cases. उसका role क्या है? तो we use case को, when a tester is reviewing a use case, what is his role? To find the The tester, sorry, the tester is reviewing the test use cases so that he can write his scenario based test cases which he would execute later. बढ़िया. Yes. और आगे मैं ही बता दूं? नहीं रुको. नहीं तुम नहीं. अब जसपिंदर. जसपिंदर के बाद हरप्रीत आपके बाद में विवेक. एक नोट करके रख लो. यार 8:38 हो गए. अखिल, I'm sorry guys, I have to jump out. मेरे मदर का अपॉइंटमेंट है आई चेकअप के लिए. Okay. I have to go now. 9 बजे वो दुकान शॉप बंद हो जाएगी. Bye. ठीक है. Sorry guys. I just checked, it's already 8:38. Bye. हाँ जी. So, what are the communication gaps? It's a component, right? Only it's a objective. Gap कैसे निकालोगे while we are reviewing a use case? No, because of asking so many questions related to the requirements. नहीं. No. हरप्रीत. Vivek. Coming back to Param. After writing scenario-based test cases, the tester would also look for any defects, anything which is wrong at the use cases part itself. Like if they are writing an alternative scenario which does not fit into the particular thing, like in a ATM example which Vishal has always took. If we are testing that sunny day scenario for withdrawing money and he is entering the wrong username password, and it, instead of it showing error message, it just prompts him out of the, like it is silent, the use case is silent on what should be the error, that it should prompt an error message or it should just push him out of all of the screens, and the welcome screen should appear again. Correct. So, ठीक है Param, you are on the right track. So to answer or to sum up what Param said and what the answer should be for this question, देखो, very simple. Why is a tester commenting when he is reviewing a use case? Very similar to the activity assignment that we gave you over the weekend. It is first to get a clarity on each and every requirement. Second, if there are any issues that the tester feels he has discovered from the use case document, so that particular issue has to be corrected in the use case document itself. If not done, that issue
will become a bug down the line when the developer would implement it. Third is again associated to the first one, which Param very rightly pointed out. Since the user would have the complete understanding of the project, not the user, since the tester would have a complete understanding of the project, he should be able to then write down all scenario-based test cases. ठीक है, सिंपल था. मेरे को लग रहा है आप लोग ना ज्यादा सोचने लग गए इस क्वेश्चन को देख के. हेलो, मूविंग ahead. Use case developers often find it difficult to determine the level of UI dependency to incorporate in a use case. Just think about that use case example that we saw. I have the answer for it. चलो बताओ, फिर खत्म करते हैं. परम भी already over time. False. And why so? Because use case would itself tell what is required from how much dependency on the user input it there should User interface. UI is user interface. The graphical user interface, what we see on the GUI. front end, GUI. The use case developers often. No, it is again false because it is left up to the developer, so he would decide himself whatever he feels right. Partially correct. Your answer is correct. Reasoning is not. It is a false. If you remember the use case document that we saw, in that whole document, there was no mention of how this particular feature would look like on the front end, how it would appear to the users. Uska koi screenshot aisa nahi tha on the appearance side of it, on the UI side of it. So the use case document talks about the functionality, the basic flow, the alternate, the exception, and all of that part only. The UI, the design is something else that is created by the designers after the use case document is baseline. So this is a false statement here. Okay, that was the end. Okay. So basically, okay, to be clear, in the last one, the UI is developed by the designers after the use case document is based on. Correct. Sequential है. देखो, if you remember that waterfall wala model na, once you are done with the requirements analysis phase, then you go into the design phase. Requirement analysis का ही part है this whole use case document creation, reviewing, and baselining it. So until and unless this use case document is baselined, you would not go down in on starting to create your designs. Okay, there is another slide on the quiz. Use cases are best source to create scenario-based test cases. We already covered this in the last slide, I guess. Oh, I'm not sharing my screen. Sorry. I was thinking कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो अजीब सा लग रहा है मेरे को. Okay, guys, able to see my screen now? Okay, use cases are the best source to create scenario-based test cases. True, false? True. Alternate है, alternate flows and exception flows हैं आपके पास, through which you can create your SBTs. Who creates a use case? Developer, tester, system analyst, या DBA? Very simple, very straightforward. DBA. Tester. हम ही तो लिखेंगे ना यूज केसेस. Oh, use case would be given by use cases would be given by the business analyst, and seeing those use cases, we would write scenario-based test cases. Business analyst तो option में ही नहीं है, और ना हमारे पास में none of these वाला option है. ये DBA क्या होगा? That was the only one which I saw would not DBA fit का it. मैं आपको full form बता देता हूँ. Maybe that would clarify. DBA is database administrator. No, then system analyst maybe. Developer tester तो नहीं है.
ये दोनों तो ऑप्शन नहीं है. विवेक, हरप्रीत यार, I need to hear from you also. करो brainstorming. टेस्टर तो रिव्यू करेगा. ठीक है. डेवलपर डेवलप कर देगा यूज केस को. क्या बोलते हो हरप्रीत? सर सी. क्या समझ नहीं आया मेरे को, सॉरी. सी सिस्टम एनालिस्ट. सिस्टम एनालिस्ट. Hmm. मेरे हिसाब से तो डेवलपर नहीं होगा. डेवलपर वुड क्रिएट द यूज केस. टेस्टर वुड टेस्ट द यूज केस. Your voice is breaking, Akhil. Oh, No, actually, somebody has to go on to Harpreet has to mute. Yeah, now it is clear. Because he is not wearing the earphones. That's why it is echoing in a different way. रूट कॉज एनालिसिस भी कर दिया भाई. Alright, चलो, in the interest of time, it is system analyst who creates the use case. Okay, to give you an overview, what would happen in a bookish world, client आया company के पास में, Infosys के पास में, let's say, Indian government पहुंची to get their income tax website created from the scratch. So people who come in from the Indian government and meet the Infosys team, that Infosys team will have people from the business side of it. So those would be your business analysts. Those business analysts are going to then understand the requirements from the client, and they are going to create a requirement document, the SRS, the PRS, BRS, BRD, जो मर्जी बोल दो उसको, which is a requirement document. Based on that requirement document, then the system analyst would create a use case document, which would be a more technical version of the requirement document that the designers, developers, testers will understand better. Based on that use case document, then the developers, testers would review it, understand it. And similarly, the DBAs are people, DBA matlab database administrators are the people who are going to take care of all the databases that are going to be commissioned in your application. चाहे वो 10 हो, चाहे 1 हो, what that database would be, Oracle होगा, which version of Oracle would it be based on the technology that you are using for your application development, वो compatibility होगी नहीं होगी, how the data would be stored, what would be the table sizes, and everything related to the database. That is the work of the database administrator. So here the answer is the system analyst is the one who would create your use case documents. Right? In agile methodology, use cases have been replaced by, Param would not answer any questions now. Param, go on mute. User story. ठीक है, simple यार. Use cases have been replaced by user stories. Use cases are created before test plan document. True or false? Vivek? True. Okay, Jaspinder said true. Vivek? True. Why true? Harpreet, why true? क्योंकि सर बता रहे थे स्टार्टिंग में इसके बारे में, मुझे याद नहीं होगा. विवेक के पास में वापस आता हूँ मैं. विवेक, why true? आपको ना अगर ये क्वेश्चन का आंसर नहीं क्लियर हुआ ना, आप कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं हुआ कि हाउ रिक्वायरमेंट्स आर क्रिएटेड, व्हेन दे आर क्रिएटेड. हरप्रीत, आई एम पुटिंग यू बैक ऑन म्यूट यार, आपके एंड से को आ रहा है. So we have to revisit this thing, what I could understand. Jasminder, are you clear on this? That use cases documents test plan are document created before the test plan document. Yes. अब अगर हमारे पास use cases हैं, if we don't have the use cases, we can't plan the test plan. देखो, very simple यार, मतलब I don't want to elaborate more on this. आप ऐसा समझो. First, you have your requirements. First thing, the requirement documents is something that is created by the business analyst. If you want to write down ना, लिख लो ये चीज. Requirements are created by the business analyst. अब IT वर्ल्ड के अंदर उनको BA बोलते हैं, BA रोल है. रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आपके यूज केसेस बनते हैं, विच आर क्रिएटेड बाय द सिस्टम एनालिस्ट, जो अपन ने सेकंड क्वेश्चन में देखा है. नाउ सिंस यू हैव दीज टू डॉक्यूमेंट्स इन योर प्रोजेक्ट, नाउ
the developers, testers, designers, DBAs, whosoever are there in the team, they are now going to review these documents, get an understanding of what this application is. और जो questions हैं वो clarify करेंगे until these documents are baseline. Once these documents are baseline, which means that अब इस document के अंदर जो लिखा हुआ है हमें वो सब समझ में आता है and there are no more changes that are going to happen in these documents. Then we move forward to create, to develop, to write your code of the application, and at the same time then you start your testing process. When you start your testing process में the first thing that we will do is create our test strategy document, then create your test plan, then create the test cases, then execute those test cases. If any defect is found during the execution of the test cases, create a defect, log that defect, do your regression, do all of those testing methods, testing types that we discussed. तो ये flow है, ये आप लिख लो, ये आप अपने दिमाग में बिठा लो. This is going to happen across all the projects, be it agile, be it a non-agile. वहाँ पे use case नहीं होंगे, user story होगी, but then the flow would remain the same always. Okay, moving further, can use case be modified during any stage of SDLC? We discussed this earlier also. Yes, we can modify it. I saw Harpreet nodding her head. Though if the use case is modified, we have to do it again through the CR process. The change request process has to be raised. जो काम हम लोगों ने पूरे एक बड़े चंक के लिए, एप्लीकेशन के चंक के लिए किया था, when we had gone through all the phases of that project, if there is a new change which is a major change, एक change requirement change request एक खुलता है, एक CR खुलता है, and for that particular change again all of those phases are followed. Okay, so this is the workshop, this is the assignment for today. WhatsApp मीडिया मतलब आपको मैंने आपको एक फोटो भेजी है अपनी on WhatsApp chat. Now using that photo from WhatsApp itself, you have to post it on Facebook. You don't have to download it on your system. Through WhatsApp itself, और आप ये भी ले लो, you keep it open, you can even download it on your system. Through WhatsApp, you have to share the WhatsApp media on my Facebook page. ठीक है, मैं आपको ये वर्कशॉप आपको WhatsApp पर भी भेज दूंगा. So this is the requirement, and on this particular requirement, you have to write a user story using the same template that we just read through as क्या था वो वाला. And based on that user story, once you create that user story, then you have to review that particular user story, or you can say that you have to review this particular requirement and write the review comments. जो अपन ने पहले परसों exercise करी थी, the same thing, same template you have to use, and you have to write the review comments, which you are going to discuss in the Scrum meeting. Scrum meeting is one of those meetings wherein you go in and ask all the questions that you have regarding that particular user story that you are reviewing. ठीक है, समझ में आ गया असाइनमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट क्लियर है? ठीक है, रिक्वायरमेंट में आप लोगों को व्हाट्सएप पर भी भेज देता हूँ. एंड देन फॉर टुमारो we have two requirements that we are going to review. I think let's keep tomorrow's day to review the requirements from our weekend, from this particular assignment, and also let's go back to our assignment जहाँ पे अपन ने अभी अपने subjective questions के answers review नहीं करे थे. So let's keep tomorrow's session for 2 hours occupied with these particular things. ठीक है, any questions on this workshop, this assignment for tomorrow? We are no, I have a question. We are writing these user stories as testing for WhatsApp or testing for Facebook. एक minute, let me change your statement only. Param, we are not writing user stories. We are going to write only one single user story for this requirement. Okay. That is the sweet part of using user story. बहुत कुछ नहीं चाहिए अपन को, one
only one user story for this requirement. But review comments at that stage. रिव्यू कमेंट्स में कितने भी रिव्यू कमेंट्स आ सकते हैं, दैट इज अप टू यू अंटिल यू गेट द क्लैरिटी फॉर दिस रिक्वायरमेंट. आप 10 क्वेश्चन पूछो, 50 पूछो, एक पूछो, आपकी मर्जी है. बट आफ्टर यू आर डन विद योर रिव्यू कमेंट्स, तो अगला क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा स्क्रम मास्टर से, एंड ही विल टेल यू टू एस्टिमेट दिस पर्टिकुलर यूजर स्टोरी. और अगर आप एस्टिमेट करते हो बेस्ड अपॉन वॉट एवर क्लैरिटी यू हैव इन योर हेड, इफ यू से कि मेरे को 2 घंटे लगने हैं एंड यू हैव बीन असाइन्ड दिस यूजर स्टोरी, तो आपको वो 2 घंटे में अगर आपका कंप्लीट नहीं होता है काम, which will include you to create your test cases, which will include you to execute your test cases, which will include for any bugs that you find out, उनको regress करना. So if you are not able to complete in whatever stipulated time that you have given as an estimate for this user story, the Scrum Master is coming back to you with a bad face, for sure. तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट आपको क्लियर नहीं है, आपके एस्टिमेट्स कभी भी ठीक नहीं आएंगे. एक बार 2 बार चलो कोई भी है, इंसान है भाई, ठीक है, एक बार 2 बार गलती हो जाएगी एस्टिमेट्स में, एस्टिमेट करने में, बट इफ इट इज हैपनिंग ओवर एंड ओवर अगेन, आई विल एक्सप्लेन व्हाई दिस इज अ बिग प्रॉब्लम इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट स्क्रम. आपका पूरा आपके स्क्रम का ही आपका टारगेट मिस होता है. दिस वी विल कवर इन अवर एजाइल वाला सेशन. बट टू आंसर दिस your question from this particular assignment, एक user story लिखनी है, n number of review comments could be there based upon your understanding. ठीक है, so that marks the end of our session on requirements, use cases, user stories. So let's take tomorrow's time to review this assignment, last assignment, and the subjective answers. Okay, and I have a question related to my assignment. I want to discuss something with you. कल करते हैं. Then how I'm going to fix it? It was the same thing given to everybody. No. चलो यहीं पे पूछो आप. If you have this question, so others also may get some clarity. Yeah, the review form I submitted to you, right? Mhm. And then you said it's very harsh. नहीं देखो, No. I would not say it is harsh. I would say use a language which is polite. And can you give me the example? I thought it's very अपन ने किया था ना डिस्कस. देखो, if you it's have very straightforward. I'm asking all the questions. So I don't have my email open. यहाँ पे मेरा. So देखो, in very simple polite language, it could be as per my understanding from this section, I see this thing. Can you please let me know if this is the right understanding? This could be one way. Or on this particular section, it would be great if you can throw some more light for my own clarity. got it. ऐसे generic मतलब, this is how in US you talk to anybody out there. वैसे मतलब अब आप सीधा कोई एक ओपन एंडेड क्वेश्चन या एक ब्लंट क्वेश्चन पूछोगे, तो सामने वाला बंदा ना इन दिस आईटी वर्ल्ड इज गोइंग टू गेट ऑफेंडेड वेरी क्विकली. वो बोलेगा यार कहाँ बॉसी वाला वो आ गया बंदा, ये उसको मैं नहीं आंसर कर रहा. आपको वो लटकाता रहेगा, सारी टीम को वो आंसर दे देगा, आपको आंसर देने में ना वो. As per my understanding, can you? I understand. देखो, if you have these 50 comments that you have to put now, after about 15-20 comments, you start struggling with words कि यार कितनी बार मैं ये लिखूं सेम चीज. अब as per my understanding, can you please throw some light? अरे टॉर्च मारेगा, क्या करना है अब भाई. तो I understand it gets difficult, but करना पड़ता है. Okay. But I don't know. Let me stop this recording.